Hello students. So now we start with chapter 2, that is acids, bases and salts. This is a very important chapter, so watch all the lectures of the series properly. So before starting the lecture, I would like to request you to kindly subscribe this channel so that you can get an update whenever a new video is posted. और आपको सारी वीडियोस देखनी है सीक्वेंस में in order to increase your marks. अगर आप सभी वीडियोस को properly follow करते हो और देखते हो, I can guarantee you 100% marks in the exam. Okay, so and if you have any doubts, you can post in the comment section and you can also join our weekly doubt sessions on which I'll be available live on every Sunday, right? Okay, so let's begin with the chapter. So you have learnt in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively present in them. जैसे सपोज यू टेस्ट सम फूड आइटम जो सार होता है लाइक वो आपको खट्टा टेस्ट होता है उसमें तो उसमें बेसिकली एसिड प्रेजेंट होती है राइट और अगर कोई ऐसा फूड है जो आपको कड़वा लग रहा है इट्स बिटर इन टेस्ट तो वो बेसिकली उसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है ओके सो एक ही हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं ओके So, if someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? जैसे अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है दैट मीन्स उसके स्टमक में एसिड का कंटेंट बढ़ गया है तो आप उसको क्या देते हो डू यू गिव लेमन जूस विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन कैसे आप डिसाइड करोगे ओके सो विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी So surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other's effect. तो हम बेसिकली क्या करते हैं अगर एसिड का कंटेंट बढ़ गया है स्टमक में तो हम एक बेस ऐड करते हैं ओके ये एक जनरल नॉलेज आपको प्रीवियस क्लासेस से है कि जब एक एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं ओके तो वो एसिड का कंटेंट स्टमक में जैसे डिक्रीज होगा देन द पर्सन विल स्टार्ट फीलिंग बेटर ओके एंड इनिशियली हमने टेस्ट भी किया था सब्सटेंसेस को इन प्रीवियस क्लासेस कि हम सार और बिटर सब्सटेंसेस को विदाउट टेस्टिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे राइट सो यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड दिस पार्ट इज रियली important जस्ट लर्न दिस थिंग कि जो ब्लू लिटमस कलर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं जो सब्सटेंसेस दे आर एक्चुअली एसिड्स ओके एंड बेसिस आर बिटर bases bitter होते हैं and they change the color of the red litmus to blue ये दोनों आपको कलर चेंजेस याद रखने होंगे so blue to red is acid and red to blue is base right so litmus होता क्या है actually litmus is a natural indicator okay turmeric is another such indicator इंडिकेटर क्या है उससे आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस तो लिटमस है एक तो नेचुरल इंडिकेटर है अनदर वन इज टर्मरिक टर्मरिक हल्दी जो सबके घर में प्रेजेंट होता है राइट नाउ हैव यू नोटिस्ड दैट अ स्टेन ऑफ करी on a white cloth becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it सी अगर आप एक व्हाइट क्लॉथ लो और उसके ऊपर आपका एक येलो कलर्ड स्टेन ऑफ करी इज देयर ओके तो आप उसे जब सोप से रब करोगे तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा तो सोप जो होती है उसमें बेसिकली बेस होता है ओके और जो करी है इट इज इन येलो इन कलर तो उसका जो कलर चेंज होता है दिस इज ड्यू टू द बेसिक नेचर ऑफ द सोप ओके So it turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. उसका कलर फिर से चेंज होता है इनिशियली येलो होता है जब आप सोप टच करते हो उस पर रेडिश ब्राउन हो जाता है और जब आप उसे रिमूव कर देते हो वॉश कर देते हो आफ्टर सोकिंग इन वाटर तो अगेन वो येलो हो जाएगा राइट सो यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स आप सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से यूज कर सकते हो मिथाइल ऑरेंज है और phenolphthalein है so these are used to test for acids and bases so basically इसमें जो आपको चीजें याद रखनी है one is the color change blue to red for acids red to blue for bases
Then you have to remember कि हमारे natural indicators कौन से हैं, litmus and turmeric, ठीक है. Synthetic indicators कौन से हैं, methyl orange and phenolphthalein. All these things can be asked as short questions, right? So in this chapter, we will basically study the various reactions that are related to acids and bases and how they cancel each other's effect, और इस particular property को हम day to day life में काफी practically use कर सकते हैं. How we'll use that also we are going to study. So let's have some more understanding about the litmus solution. So litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Halophyta, and is commonly used as an indicator. Okay, तो ये एक purple dye होता है और एक plant होता है lichen, वहां से हमें मिलता है. Fine. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. ठीक है, ये जब कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है, इट्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो वो पर्पल कलर का रहेगा. ठीक है. देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, and geranium, which indicate the presence of acid or base in the solution. So these are called acid-base indicators or indicators. So we get plenty of examples. Initially हमने देखा था litmus और turmeric है. उसके अलावा red cabbage leaves, then some flowers they are mentioning. So these are also all the examples of indicators, right? Hello students. So now here is a question. This is a very conceptual question. Let's try to answer this. So you have been provided with 3 test tubes, okay? One of them contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. Now if you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? तो basically इधर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, राइट? तो एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, ओके, एंड एक में बेसिक सॉल्यूशन है, राइट? सो जो डिस्टिल्ड वाटर है दैट यू नो वो न्यूट्रल होता है, वो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक की कैटेगरी में आता है. तो अब आपके पास एक रेड लिटमस पेपर है, राइट? तो रेड लिटमस पेपर यूज करके हमें आइडेंटिफाई करना है, तो क्या अप्रोच आपको रखनी चाहिए? ओके, सो यू विल डिप दिस रेड लिटमस पेपर, इसे आप डिप कर दो किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है? एक एक करके आप चेक करोगे. फाइन. तो अगर इसका जो कलर है रेड, रेड ही रहता है, कलर डज नॉट चेंज, ओके, सो बेसिकली रेड लिटमस टू ब्लू कब कन्वर्ट होता है? इन द केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है? तो अगर आपका बेसिक सॉल्यूशन में डिप होगा ये रेड लिटमस पेपर, तो इसका जो कलर है वो रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज नो. ओके, तो इस तरह आप बेसिक सॉल्यूशन को पहले आइडेंटिफाई कर लोगे. सो वन टेस्ट ट्यूब इज डन. अब आपकी जो ये मींस जो स्ट्रिप है दैट इज नाउ ब्लू इन कलर. तो ब्लू टू रेड कौन सा मटेरियल कन्वर्ट करता है? एसिड. सो नाउ इफ यू विल डिप इट इन द एसिड टेस्ट ट्यूब, तो आपका कलर कैसे चेंज हो जाएगा? ब्लू टू रेड, राइट? और जो थर्ड ट्यूब आपकी बची है, थर्ड ट्यूब इज कंटेनिंग अ न्यूट्रल लाइक मटेरियल, सो इट विल नॉट कॉज एनी चेंज इन द कलर. तो आपको बेसिकली ये ट्रिक अप्लाई करनी है, एंड यूजिंग अ सिंगल लिटमस पेपर यू कैन आइडेंटिफाई द 3 substances. Thank you so much for watching the lecture. Please go through it properly and learn all the concepts because these will be helpful in the coming lectures. So stay tuned for more lectures and do subscribe the channel to get the regular updates. Thank you so much.